So today we will do the revision of lens maker's formula. Now Aditya, what is lens? Now name any two type of lenses. Concave and convex lens. What is the other name of concave lens? कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या है? बोलो, कोई भी बताए. हाँ, डाइवर्जिंग लेंस. कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. एंड डाइवर्जिंग वाई इट इज डाइवर्जिंग? बिकॉज इट डाइवर्जेज पैरेलल बीम ऑफ लाइट. मीन्स उसको और स्प्रेड कर देता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को. एंड कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेज पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट वन पॉइंट. इट्स क्लियर? इन आवर कोर्स देर इज डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड डबल कॉन्केव लेंस. मीन्स जिसमें दोनों सरफेस या तो कॉन्वेक्स हो या क्या हो, कॉन्केव में. ये ऐसे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव? फॉर एग्जांपल हियर इफ यू सी दिस सरफेस फ्रॉम योर साइड इट इज कॉन्वेक्स. जो उठा हुआ सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, और जो अंदर धंसा हुआ सरफेस है हमारी साइड से क्या है, it is concave. It is clear? So here both the curved surfaces are concave, so it is double concave lens. And if radius of curvature is same, मतलब जो इसका radius of curvature है वही उसका भी हो, तब उसको क्या कहते हैं, equiconcave. And here if radius of curvature is same, then it is equiconvex. It is clear? And in our course only these two lenses are there. It is clear? Now there may be plano-concave convex lens, concavo-convex lens. It's clear? Plano-convex means in which one surface is plane. One surface is plane. This is plano-convex. Plano-concave means in which one surface is plane. This is plano-concave lens. It's clear? So these are some other lenses also, but we will do the derivation for these two only. For double concave and double convex. Now see here, what is focal point? Yes, Priyanka. Focal point, who can tell? Focal point of the lens. Yes. Sir, the point where Lenses are having two focus. लेंस में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं. क्यों? क्योंकि लेंस में क्या है, लाइट रे इस तरफ से भी पड़ सकती है और उस तरफ से भी इंसिडेंट रे आ सकती है. सो इट इज हैविंग टू फोकी. इट इज क्लियर? वन इज द फर्स्ट फोकल पॉइंट. व्हाट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट? फर्स्ट फोकल पॉइंट इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द कर्व्ड surfaces. फॉर एग्जाम्पल हियर this left curved surface is having its center in this side and right curved surface is having center in this side. This line which passes through C1 C2 is called the principal axis. What is first focal point? It is that point on the principal axis such that rays of light diverging from it, जो rays of light इससे diverge कर रही हैं, they become parallel to principal axis after refraction. So this point is called the first focal point and its distance from the optical center is called the first focal length. आदित्य इधर देखो, its distance from the optical center is called first focal length. Now what is optical center? So in case of thin lens, optical center is that point within the lens and on the principal axis. Within the lens and on the principal axis, it is that point in case of thin lens through which rays of light pass undeviated. Rays of light pass undeviated through optical center. And in case of the double equiconvex and equiconcave lens, जो equiconvex हैं या equiconcave lens हैं, उनमें optical center ज्योमेट्रिकली कौन सा पॉइंट है, जहां पर इस लाइन को क्या कहते हैं, एपर्चर. दिस इज द एपर्चर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. जिस पॉइंट पर वो कट करें दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. बट ओनली इन केस ऑफ द
equiconvex and equiconcave. Similarly here, suppose it is a equiconvex lens, then this is the aperture and this is the principal axis. This will be the optical center. What is the property? Ray of light passing through it pass undeviated. It is clear? Now, so here in case of convex lens, what is the first focal point? It is that point on the principal axis such that rays of light diverging from it become parallel to principal axis. It is clear? What will be in this case? It is that point on the principal axis such that rays of light appear to converging towards it. Rays of light appear to converging towards it. See here. ये रेज क्या है, यहां पर appear to converge कर रही हैं. Why they are appear to converging? क्यों? क्योंकि उसके पहले लेंस रखा है, लेंस रखा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा. So it is that point on the principal axis such that rays of light appear to converging towards it become parallel to principal axis after refraction. It is clear? This is the first focal point, and you can see here this distance is called the first focal length. So all of you remember one thing, that in convex lens first focal point is in the left side and in concave lens it is in the right side. Then what is second focal point or principal focal point? कोई बताएगा second focal point क्या है, principal focal point क्या है? Yes, विवेक. जो रेज पैरेलल आती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में इधर पास एक्चुअली थ्रू सम पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस और दे अपीयर टू पास थ्रू दैट पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. सी हियर, कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअल में पास होती रेज विच कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज विच कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एंड वन मोर थिंग, इन केस ऑफ द थिन लेंस मतलब जिसमें ये चीज कम हो, ये चीज क्या हो, नेग्लिजिबल हो, वी एज्यूम दैट द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट द एपर्चर. रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग टेक प्लेस एट द एपर्चर. सो सी हियर, व्हाट इज द सेकेंड फोकल पॉइंट? इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which rays of light either actually converge, towards which rays of light either actually converge or appear to diverge after refraction, which are coming parallel to principal axis before refraction. मतलब जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर एक्चुअली कन्वर्जेस टुवर्ड्स F2 or here in case of concave lens what will be? They appear to diverge from F2. Appear to diverge means जाती ऐसे हैं, but when they are produced back they appear to come from this point. So this is called the F2, and its distance from the focal point is known as कितना, क्या कहलाती है? सेकेंड फोकल लेंथ. दैट इज नोन एज सेकेंड फोकल लेंथ. इट इज क्लियर? नाउ सी हियर, वी विल डिड्यूस द फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर थिन लेंस. एंड व्हाट इज लेंस मेकर्स फार्मूला? 1/f इक्वल्स टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2. व्हाट इज n? It is the refractive index of the material of lens with respect to the surrounding medium. मतलब अगर ये लेंस एयर में रखा है तो n का मीनिंग है ANG. n का मीनिंग क्या हो जाएगा? ANG. अगर क्या है ये लेंस वाटर में रखा है देन n मीन्स व्हाट? WNG. It's clear? So we will deduce the formula of its focal length when it is kept in the air. It is clear? R1 and R2 are what? It is the radii of curvature of the both the curved surfaces of the lens. So see here,
ये लेफ्ट कर्व सरफेस है, उसका पोल क्या है P1, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है C1. सो P1 C1 इज इक्वल टू R1. इट इज क्लियर. राइट कर्व सरफेस, पोल इज P2, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C2. सो P2 से C2 तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? दैट इज द R2. नाउ सी हियर, here O is an object which is situated at this point on the principal axis. The rays which are diverging from here after suffering refraction at the left refracting surface, after suffering refraction at the left refracting surface, left refracting surface means this. It's clear. Since they are going from air to glass means rarer to denser, so bend towards the normal. बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स क्या हो जाएगी? ये ऐसे बेंड हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ गोइंग अनडेविएटेड, ये ऐसे जाने की जगह ये क्या है? बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ सपोज देयर इज नो राइट कर्व सरफेस. अगर राइट कर्व सरफेस ना होता तब क्या होता? ये रे ऐसे सीधा जाती और इमेज कहाँ पर बनती? आई डैश पर. मीन्स image of O by the left refracting surface will form at I dash. It's clear. Now this I dash will act as an object for the right refracting surface. Now at right refracting surface what will happen? Here this you can name A, at this is B. At point B what will happen? You draw the normal. Now since it is going from where to where? ग्लास से एयर, डेंसर टू रेयरर, देयरफॉर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स नाउ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड राइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ आई डैश एट द पॉइंट आई. मतलब अगर हम ये पूछें लेफ्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट पॉइंट कौन सा है? ओ. इमेज पॉइंट कौन सा है? आई डैश. रिफ्रैक्शन किस इंटरफेस पर हो रहा है? एयर टू ग्लास इंटरफेस. एयर टू ग्लास इंटरफेस. देयरफॉर N विल बी ANG. एट द राइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हाट इज ऑब्जेक्ट? आई डैश. इमेज इज आई. रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस ग्लास टू एयर इंटरफेस. ग्लास टू एयर इंटरफेस मीन्स N will become GNA. N will become GNA. Here we have assumed that the lens is thin, therefore P1 and P2 will be very close, क्योंकि ये क्या होगा? बहुत ही कम होगा. So see here, when refraction take place at the left refracting surface, refraction take place on left refracting surface. So see here, here O is object and I dash is image. Object is O and image is I dash. So see here, what will be the value of U? U will be equal to P1 से O. So it is P1O. P1O, so it will be equal to U. You will not write minus. हमने कल बताया था जब भी लिटरल में हम रखते हैं, लिटरल टर्म्स में, एल्जेब्रिक टर्म्स में वैल्यूज रखते हैं, हम प्लस माइनस कुछ नहीं लेते हैं. नाउ सी हियर, व्हाट इज V? V will be equal to P1 से I dash, that is equal to V dash. What is N here? It will be ANG because the refraction is taking place at air glass interface. It is clear, which is equal to N. And what is R? So R will be equal to P1 C1. P1 C1, that is equal to R1. Therefore, from N upon V minus 1 upon U equals to N minus
1 upon r. Substitute the value. So n equals to what? N. V is v dash minus 1 upon u. u के प्लेस पर u है. That is equals to n minus 1 upon r1. This is the equation 1. Now see here, when refraction take place on right refracting surface, right refracting surface. So now object is I dash, while image is I. It's clear? So what will be u here? U will be equals to P2 say I dash, P2 I dash. Now see here, since length is thin, therefore P2 I dash and P1 I dash will be equal. क्योंकि लेंथ थिन है तो P1 P2 बहुत ही क्लोज पॉइंट्स हैं. सो P2 I dash you can write as P1 I dash. It's clear? P1 I dash and P1 I dash, you know, it is equal to V dash. Then what will be V? V is P2I, and P2I already we have taken as V. Here P2I is this distance is P2I. It is V. Because now distances will be measured from the pole of the right refracting surface, which is P2. So it will be P2I. P2I equals to, we have taken as V. Then N will be equal to what? Refraction is taking place at glass air interface, glass से air में. So it will be equal to GNA. And what will be GNA? Since you have taken ANG equals to N, therefore GNA will be equal to 1 upon N. What will be R? It will be P2C2. P2C2. Center of curvature is this. So it will be equal to P2C2. That is equals to R2. So once again from this relation, when you will substitute the value, what will you get? N upon V. What is N here? It is 1 upon N divided by V. V is how much? V minus 1 upon U. U की वैल्यू कितनी है? V डैश के इक्वल. Equals to N minus 1, that is 1 upon N minus 1 divided by R. R is R2. Now we will simplify this. So you can see here, when you will simplify, so it will become 1 upon N into V minus 1 upon V dash equals to, when you will simplify this bracket, what will you get? 1 minus N upon N. 1 upon N minus 1, N LCM हो जाएगा, 1 minus N upon N, और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. So that is 1 minus N upon NR2. It's clear? Now multiplying each term by N. Each term by N. हर एक टर्म को N से मल्टीप्लाई करें. जब मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 1 अपॉन V माइनस N अपॉन V डैश. And here when you will multiply N and N will be cancelled. 1 minus N can be written as N minus 1 minus sign common ले लिया. This is R2. This is the equation 2. Now after this we will add equation 1 and 2 side by side. On adding equation 1 and 2 side by side. So see here, from 1 plus 2,
When you will add this and that, what will you get? N upon V dash minus n upon V dash will be cancelled. You will get 1 upon V minus 1 upon U equals to, here n minus 1 upon R1 plus this is minus n minus 1 upon R2. It's clear? N minus 1, you will, when you will take out common, it will be equal to 1 upon R1 plus minus 1 upon R2. It's clear? This is 1 upon V minus 1 upon U. Now see here, as you know that when object is situated at infinity, image forms at which point? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर. इट्स क्लियर? सो सी हियर, व्हेन u इक्वल्स टू इन्फिनिटी, v इक्वल्स टू f, v की वैल्यू इज इक्वल टू f. यू सब्सटीट्यूट 1 upon f minus 1 upon infinity equals to n minus 1 within bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2. What is 1 upon infinity? 0. So on simplifying, you will get this formula. It's clear? This is called the lens maker's formula. It's clear? 1 upon infinity is 0, so on simplifying you will get that. It's clear? Now see here, if you compare this equation and this equation here, 1 upon V minus 1 upon this one. If you compare this and that, you will find that which side is same? लेफ्ट हैंड साइड या RHS? RHS दोनों का सेम है. मीन्स 1 upon V minus 1 upon U equals to 1 upon F. And this is known as lens equation. Lens equation. It's clear? Now see here. We will deduce special formulae for the equiconvex and equiconcave lens. हमको मालूम है जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं? R1 से. जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं? R2 से. सपोज क्या है, रे ऑफ लाइट इस तरफ से पड़ रही है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. Now as you know that all the distances are measured from pole, and second thing, distances which are measured in the direction of incident ray taken positive, opposite to incident ray taken negative. पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? लेफ्ट में या राइट में? ये जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? It will be center of curvature, not radius of curvature. Center of curvature, it will be in the left. What will be R1? It will be positive or negative? It will be positive, plus R1. It's clear? Now see here, of second refracting surface, center will be here, in right side. When you will measure R2, so R2 will be this. This will be R2. And it will be taken negative. It's clear? If it is equiconvex, अगर ये equiconvex होता तब क्या होता? R1 plus R and R2 minus R. When you will substitute in this, what will you get? 1 upon F
n minus 1, 1 upon r1, 1 upon r minus 1 upon minus r. So see here, it will be n minus 1, 1 upon r minus minus plus 1 upon r. So it will be equal to 1 upon f equals to n minus 1 into 2 upon r. You remember this one thing, that in case of equiconvex lens, r1 is taken as plus r, r2 is taken as minus r. It is clear? This will be the formula of the focal length. 1 upon f equals to n minus 1 into 2 upon capital R. If it is equiconcave lens, you can see here, equiconcave means both the surfaces are having same radius of curvature. Suppose this is the direction of incident ray, then first refracting surface will be this, second refracting surface will be this. This will be P1 and this is P2. Where will be its center of curvature? It will be in this side. Where will be its center of curvature? It will be in this side. Now what will be R1? R1 will be P1 से C1. P1 से C1 means this distance. This will be taken positive or negative? Negative, because measured opposite to the incident ray. It is clear? And P2 C2, it will be taken positive or negative? It is in the direction of incident ray, so it is plus R2. It is clear? Since it is equiconcave, therefore it will be minus R and it is plus R. So all of you remember one thing, that if the lens is equiconcave, then what will be? R1 will be minus and R2 will be plus R. When it will be substituted here, it is minus R here. It's clear? और यहाँ तो वो plus R है. When you will simplify minus 1 upon R, minus 1 upon R, that is minus 2 upon R. Minus 2 upon R. So see here, on simplifying further, what will you get? 1 upon f equals to minus 2 into n minus 1 upon r. So that's why we take focal length of concave lens as negative and of convex lens as positive. It is clear? Now after this, one more thing. Focal length of the lens, it depends upon what? It depends upon the radii of curvature of both the curved surfaces. More the radius of curvature, more will be the focal length. R अधिक होगा, F अधिक होगा. Now see here, in which case R is more. हम दो surfaces बना रहे हैं. One surface is this curved surface and another curved surface is this. Which is having greater value of R? First or second? Second में R क्या है? Bigger है. Means its R is bigger than its R. ऐसे. But अगर देखें curvature किसमें अधिक है? It is more curved, more curvature. So ये less curvature. Here curvature is less. It's clear? So see here, all of you remember one thing, radius of curvature and curvature both are reciprocal to each other. Less curvature means radius will be more. More curvature means radius will be less. It's clear? So see here, if R is more, then F will also be more. Then F also depends upon the refractive index.
more the value of n, less will be the f. n की वैल्यू अधिक होगी, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Then one more thing, this is the formula of focal length in air. Now suppose the lens is immersed in some liquid. Here I have taken one lens whose focal length in air is, means when it is placed in air, focal length is Fe. When it is placed in water, then let the focal length is Fw. दोनों केसेज में क्या डिफर कर जाएगा. एयर के केस में n means Ang, when it will be immersed in water then n means Wng. It is clear. Now see here, its focal length in air is this and focal length in liquid you write here, not liquid. It is Fl. Now there are three cases when Ang is equal to Anl. मतलब क्या है, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, then what will happen? This lens will behave just like the plain glass sheet when immersed in the liquid. अगर क्या है, लेंस को जो ग्लास का बना है उसको एक ऐसे लिक्विड में डाल दे जिसकी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, then what will happen? Lens will behave just like a plain glass sheet. And why? Because here n means Lng. जब लिक्विड में इमर्ज कर देंगे देन n का मीनिंग क्या है, Lng. एंड Lng मीन्स व्हाट? इट इज Ang अपॉन Anl. Ang upon Anl both are equal, therefore it will be equal to 1. It is equal to 1, therefore 1 upon f equals to 1 minus 1. 1 minus 1 is what? 0. 1 minus 1 is 0, means focal length will be 1 upon 0, that is infinite, means lens will behave just like a plain glass sheet. Now see here, second case, when lens is immersed in a liquid whose refractive index is less than the refractive index of material of lens. लेंस को एक ऐसे लिक्विड में इमर्ज किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेसर स्मॉलर देन द RI ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस. देन व्हाट विल हैपन? फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज्ड, It's clear? This will be increased. Now third case, if Ang is less than Lng, means the material of lens is less denser and liquid is more denser, then what will happen? Nature of lens will change. Nature of lens will change, means now instead of behaving as converging, it will behave as diverging. मतलब convex lens will behave as concave and concave will work as convex. मतलब convex क्या करता है? कन्वर्ज करता है, तो वो डाइवर्ज करने लगेगा लिक्विड में, ऐसे लिक्विड में डाइवर्ज करने लगेगा. कॉन्केव डाइवर्ज करता है, देन इट विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस. इट्स क्लियर? So this you will remember. Now you can see question. This question has been asked in 2009. You can see here. A thin convex lens which is made of glass
refractive index 1.5, मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मीन्स ये चीज क्या दी है, ANG दिया है, ANG इक्वल्स टू 1.5. इट्स क्लियर. हैज ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मीन्स फोकल लेंथ इन एयर इज 20 सेंटीमीटर. जब कुछ ना लिखा हो मतलब वो एयर में फोकल लेंथ है. It is now completely immersed in a transparent liquid having refractive index 1.75. It is immersed in a transparent liquid जिसका refractive index 1.75 means ANL. Refractive index means absolute refractive index with respect to air. You have to find the new focal length means what will be the focal length of the lens in liquid. So see here, कैसे करेंगे इसको तो सब लोग इसको समझ लें. 1/FA इट विल बी इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला इट विल बी इक्वल टू ANG माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2. सो यू सब्सटीट्यूट 1/FA इज हाउ मच, 1/20. दिस इज ANG इज 1.5 minus 1 1/R1 minus 1/R2. When you will simplify, it will be 1.5 minus 1. आदित्य, सबसे आसान क्वेश्चन. कैलकुलेटर है? हम पूछ रहे हैं ये क्या होगा. वेरी गुड, 0.5. इसे हंसने की क्या बात है. 0.5 1/R1 माइनस 1/R2. दिस इज 1/20. सो देख लो 0.5 को इधर ले आए. सो इट विल बी इक्वल टू 1/20 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1/R1 माइनस 1/R2. नव श्रुति, तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, हाँ बताओ. 20 इंटू 0.5 100. 20 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 100. 20 इंटू 0.5, 25 जा 100, डेसिमल एक प्लेस पर लगाया तो 10 हो गया. तो कितना हो गया, 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल्स टू 1/10. नाउ यू हैव टू फाइंड FL. तो जब इसको लिक्विड में इमर्ज करेंगे देन प्रियंका व्हाट विल बी N क्या होगा. इस तरह की क्वेश्चन कई बार आए हैं बोर्ड में. जब लेंस को लिक्विड में इमर्ज किया जाएगा तब N का मीनिंग क्या है, बोलो. WNG, LNG आया समझे. यहां पर हम क्या लिखेंगे, LNG. इट इज क्लियर. नाउ व्हाट विल बी LNG. फर्स्ट यू फाइंड आउट LNG. LNG मीन्स ANG अपॉन ANL. ANG upon ANL. ANG is how much? 1.5 upon 1.75. That is 150 upon 175. 25 6 ja 25 7 ja 6 upon 7. It is clear. Now you find out 1 upon FL. So FL के केस में this formula will become here LNG. Now you substitute the values, क्योंकि अब तुमको सभी वैल्यूज मालूम है. When you will substitute LNG minus 1, 6/7 minus 1 within bracket 1/R1 minus 1/R2 1/10. It's clear.
So see here 6 upon 7 minus 1, तो ये 6 minus 7 upon 7, that is minus 1 upon 7, minus 1 upon 7 into 1 upon 10, this. So what will be FL? Minus 70 centimeter, means what has happened? Its nature has changed. पहले ये कैसा था? ये कॉन्वेक्स था. पॉजिटिव फोकल लेंथ मीन्स कॉन्वेक्स, क्वेश्चन में गिवन भी है. नाउ इट इज बिहेविंग लाइक ए कॉन्केव लेंस. इट्स क्लियर? और तुमने देखा है इसको कैसे लिक्विड में इमर्ज किया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस. So its nature will be changed. Now it will behave like a diverging lens. So you can see इस तरीके के कई क्वेश्चन कई बार इसी उस पर आए हैं. Now you can see here one more question. Vivek. Now this is asked in 2001, example 6. You can see here. A plano-convex lens has the radius of curvature 10. Now you see here, this is a plano-convex lens. Radius of curvature 10 centimeter. Gauri, what is R1 and what is R2? बड़ा सिंपल है. R1 and R2. R1 will be equal to 10 centimeter and R2 is infinity, since radius of curvature of plane surface will be infinite. Calculate the refractive index of the material of lens, means ANL you have to, ANG you have to find. It's clear? What is given? Calculate the refractive index of the material of lens. Its focal length is 80 centimeter under water, means FW is 80 centimeter. It's clear? And given refractive index of water is how much? A and W is 4 upon 3. It's clear? So see here, when it is immersed in water, then what will be the focal length? Focal length in water will be given at 1 upon FW equals to, yes, याचिका. Now what will be N? जब हम वाटर में फोकल लेंथ निकालते हैं तो N की मीनिंग क्या है? अभी बताया था. क्या होगा? WNG. It will be WNG. N will be WNG minus 1 within bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2. So first you find out WNG. So 1 upon FW is how much? 80. This is WNG minus 1 into 1 upon R1 is how much? 1 upon 10 minus 1 upon infinity. So what is WNG minus 1? 1 upon 80 multiplied by 10, that is equals to 1 upon 8. So what will be WNG? 1 plus 1 upon 8, that is 9 upon 8. But हमको तो फाइंड आउट करना है ANG. इट्स क्लियर? अब अली बताएंगे. WNG का फार्मूला क्या बनेगा? हाँ वो गलत. पहले राइट साइड का डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड का. ऐसा जे पहले NG अपान NW, ये ऐसे याद रखें. मीन्स इट विल बी ANG upon ANW. Now what will be ANG?
ए एन जी इक्वल्स टू डब्ल्यू एन जी इंटू ए एन डब्ल्यू. डब्ल्यू एन जी you have calculated at 9/8. It is clear. And what is A and W? 4/3. So this is 4 2 ja, 3 3 ja, that is 3/2. So क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आएंगे. आए सुझे. Now you can. अच्छा वो बाद में.